Viewers, Prime Minister Modi broke his silence on the endless attacks from the Congress-led opposition, the ecosystem, if you will. He took on the Kabr Khudegi lobby head on. That nasty chant of Modi Teri Kabr Khudegi was finally taken head on by the Prime Minister, and the Prime Minister declared it's not just one ordinary political slogan but a sign of deep hatred in their hearts. Prime Minister Modi detailed why the Congress hates him so much. He said Congress hates Modi because Modi has uprooted their decades of corruption. Congress hates Modi because Modi has dismantled Congress's vote bank politics and family rule. Prime Minister Modi shredded the Gali gang, that group of abusive critics, and the Gandhi family, exposing their hypocrisy. Viewers, remember Rahul Gandhi's so-called Muhabbat Ki Dukaan? Prime Minister Modi exposed the nafrat, the real hate behind it. He listed examples of intolerance under Congress rule, from misleading the nation with empty slogans like Garibi Hatao to failing the poor for decades. Prime Minister Modi slammed the Congress's Yuvraj, his words not mine, for calling Union Minister Ravneet Singh Bittu a traitor just because he is a Sikh and left Congress to join the BJP. Viewers, Prime Minister Modi called it Congress's long-standing hate towards Sikhs. How can someone preach love while spreading such poison, he asked. And viewers, in a light but extremely powerful moment, Prime Minister Modi revealed his health secret. He said, I eat 2 kilos of gali daily. He was referring to the opposition narrative where they abuse Modi for everything. Prime Minister Modi said that you may raise any number of slogans, but you can never dig my grave. Modi buried the doubters with hard facts. Viewers, Prime Minister Modi said that while Congress clings to a Shahi Parivar mindset, thinking the Prime Minister's chair is their birthright, he works for every Indian. The opposition walked out. Are we surprised? Not at all. Shouting slogans against Modi's alleged dictatorship. But Modi stood firm, called out the hate and contempt of Congress and the Kabr Khudegi lobby. एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। ऐसे देश के कोटि कोटि जनों के आशीर्वाद जिस इंसान पर हो, कोटि कोटि माताओं बहनों का जिस पर रक्षा कवच हो, नारे कितने ही लगा लो, कब्र तुम नहीं खोद पाओगे। इनकी सरकार रिमोट से चलती थी, मेरी सरकार भी रिमोट से चलती है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट। Let's open this up. Kamruzaman Chaudhary ji, IP Singh, the national spokesperson of the Samajwadi Party, Advocate Vandana Sinha, spokesperson of the Aam Aadmi Party, Professor Monojit Mondal, Shazia Ilmi, the national spokesperson of the BJP, will be joining us shortly. Harshvardhan Tripathi ji will be with us. Karan Verma completes this panel. Kamruzaman ji, for years now, this Modi Teri Kabr Khudegi chant, narrative, whatever you want to call it, has been on. The Prime Minister today broke his silence and he said, what is this Muhabbat Ki Dukaan Rahul Gandhi keeps talking about? Where he wishes to bury the Prime Minister. Or forget the Prime Minister, an ordinary Indian. What kind of Muhabbat is this? Ganesh, good evening to your viewers and my fellow panelists out here. Last 10 to 11 years, we have been listening to Narendra Modi ji, our Prime Minister. And at least once we expected some concrete positive statements coming out from the Parliament, whether in the Lok Sabha or in the Rajya Sabha. It's a different story that he chose to
run away from the Lok Sabha without issuing a statement. He went to the Rajya Sabha. That's okay. That's a different issue altogether. But you know, one most important and very dangerous trend that this Prime Minister has brought in this country is that his government is no longer about governance. It's about glorification of only one individual. When every individual achievement is projected as one man's vision and every failure is blamed on others, this is not leadership, this is personality cult politics. And this cult politics that is built up over the years has manifested in today's bhashan that I can say on the floor of the Rajya Sabha. What concrete was there apart from blaming Nehruji, apart from blaming Congress, apart from blaming decades old policies that we have taken as a country together? We have not found a precedent where a Prime Minister who has to answer to the people of this country over his governance issues, over his governance initiative over the last 10 years. No, Kamru Zaman ji, listen, you began by saying that you were expecting one positive statement from the Prime Minister. Positive statement. That is what you said. Now you tell me, what is positive in calling someone a traitor? What is positive in saying Modi teri khabr khudegi? Bas aap itna bata dijiye, then we can, go over the panel. That's what he practices, a fear-based politics. If you can analyze that, a strong leader encourages debate. A personality cult. That's right. Rahul Gandhi is such a strong leader that he was encouraging debate when he said, look, he's a traitor. Right? This Modi government has mastered event management and image projection. Kamru Zaman ji, if you're going to read the prepared text, then, then a debate can't happen. I'm asking you a question. You can abuse Modi, criticize him. The BJP spokesperson will defend. But let's be clear on one thing. You said positive statement, sir. You said personality cult. You know one party which is synonymous with personality cult? It is the Congress party. You have many personalities that you've turned into cult. The High Command is another cult. But you answered just two questions. What is positive in Modi teri kabr khudegi? Bata dijiye. आज अगर आप राहुल गांधी को बोलते हो एंटी नेशनल, वो कौन सा पॉजिटिविटी है वहां पे? He has been bringing out the issues that the country has been facing, and no leader in a democracy is above scrutiny. The moment a government demands unquestioned admiration instead of answering questions, it stops serving. No. This is not about unquestioned admiration. This is about basic civility, courtesy. That's all. Civility, sir, civility. It's a small word. Is that too much to ask? Rahul Gandhi has been at it. He berated the vice president, was filming when Mr. Dhankar was being mocked. He called someone traitor because the person left the Congress party. What is this mindset? Let me just remind you, when Om Birla was criticized, he went and hid behind the OBC. When Dhankarji was criticized, he was not criticized for a person, he was criticized for his actions or his policies. When Modi ji was criticized, he went back to Modi jaat ko gali de diya. Kal Bittu ji. I am not even asking you that. I am not saying that. No. Look, the BJP has been saying that Rahul Gandhi, by insulting Mr. Bittu, has insulted the Sikh community. Let's for a moment ignore that. The insult to the Sikh community bit. But what justifies calling someone a traitor, sir? Can I call anyone on the panel a traitor? You tell me. नहीं, जो गद्दार है तो गद्दार बोलेंगे ना. बिट्टू इज अ गद्दार टू द कांग्रेस पार्टी. ये कौन डिसाइड? गद्दार टू द कांग्रेस पार्टी. Congress is a country now. Congress is no longer a party. This is what I wanted out. Kamru Zaman ji has finally revealed the truth. हर्षवर्धन जी, सुन लिया आपने? कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की है रवनीत बिट्टू ने, इसीलिए राहुल गांधी ने डिक्लेयर कर दिया. और राहुल गांधी कौन है? वो पर्सनालिटी कल्ट के सबसे बड़े एग्जाम्पल है. हर्षवर्धन जी. प्रणेश जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस अब जहां चली गई है उसको वापस खींच कर लाना बड़ा कठिन होगा. सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि लुधियाना की जनता ने हरा दिया, गद्दारी दिखा दी. तो अमेठी की जनता ने जब राहुल को हराया था तब क्या हुआ था? और इंदिरा गांधी ने तो पूरी की पूरी कांग्रेस ही तोड़ दी थी. तो इंदिरा जी के लिए क्या वो कहना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जहां चले गए हैं ना, वहां
भारतीय राजनीति में अकल्पनीय है ये। नेता एक दूसरे पर हमला करते हैं, एक दूसरे पर बहुत तीखी टिप्पणियां करते हैं, कई बार अभद्र भी हो जाते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए, सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। और इसीलिए there's a problem in that line. We'll try and fix that. But you know, by the Congress's definition of who's a traitor, Shazia Ilmi is also a traitor. Shazia Ilmi left the Aam Aadmi Party. Vandana ji, would you call Shazia Ilmi a traitor, Gaddar? Shazia ji, I'll come to you. This is for Vandana Sinha ji. See, first of all, Pranesh, I'm telling you that it's difficult to, because if someone comments on someone, we have to think about it. First of all, we have to maintain the dignity, the sanctity of the parliament. This is the first thing. This is the temple of constitution. But why it always happens with others when others react on the statement of PM or the any party person of the ruling government, they are always blamed. But we never say anything when other parties persons are called. Today everyone has seen how the Prime Minister was in the discomfort, and the Kejriwal and our party members were directly attacked by the Prime Minister Modi. What made him so discomfort? Why it was comfort to say anything to anyone? But when it comes to PM Modi, when it comes to his party member, it's always difficult. It's always वंदना जी, आप उसको क्यों पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट कर रही हैं? मैंने सीधा सवाल पूछा है, क्या किसी को ट्रेटर बोल सकते हैं? कहां चली गई आप? सीधा सवाल है। जैसे शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया, क्या वो ट्रेटर है, गद्दार है? देखिए, साजिया इल्मी ने पार्टी छोड़ दिया। साजिया इल्मी जी की अपनी श्रद्धा थी कि उनको आम आदमी पार्टी उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन शायद आज साजिया इल्मी जी को फील होता होगा, वी नेवर नो, बट वी कांट। लेकिन यही चीज है ना, ये चीज है कि जब ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे आ जाती है, व्हेन इट कम्स टू बीजेपी, नॉर्मली ये तो प्रधानमंत्री की बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री को ट्रेटर तो नहीं कहा ना, रवनीत बिट्टू को कहा, और कमरू जमान जी जस्टिफाइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ वो गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। हाउ डेयर एनीवन लीव द कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस इज इंडिया, इंडिया इज कांग्रेस। बताइए आईपी सिंह जी, आप भी ट्रेटर हैं इस हिसाब से, तो यू लेफ्ट द बीजेपी और नाउ इन समाजवादी पार्टी। प्रमेश जी, मैं अपने प्रधानमंत्री जी को लेकर बहुत चिंतित हूं। हमारे दो प्रधानमंत्री हमारे देश ने खोया है, भारत ने खोया है, और जिस तरह से उनकी सुरक्षा को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त करी है, उनके कैबिनेट के सहयोगी श्री गिरिराज सिंह ने उनकी जान को खतरा बताया है। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि इस मामले की सिटिंग जज के मार्गदर्शन में सीबीआई से जांच हो और रा को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि सीआईएसएफ लगी हुई है। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। अरबों खरबों रुपए। देखिए आईपी सिंह जी, आपको इतनी अगर सही में चिंता है प्रधानमंत्री मोदी की, तो आप पहले ये कहिए कि जो लोग ये कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वो गलत है और हम उनके साथ कोई भी नाता नहीं रखना चाहते। पहले आप वो बोल दीजिए, जांच तो होती रहेगी। सर बोलिए। देखिए जो इस तरह के नारे अगर कहीं देश में सैकड़ों हजारों विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, कहीं ये नारे लगते हैं तो उस पर कार्रवाई हुई है। अब उस नारे को आप तकिया कलाम बना लीजिए कि कब्र खुदेगी। ये सिर्फ किसी विश्वविद्यालय, ये कोई तकिया कलाम नहीं है, सोनिया गांधी के ये तकिया कलाम नहीं है। आपको मैं फिर से सुना देता हूं। नहीं, दिस इज नॉट अबाउट वन यूनिवर्सिटी कैंपस। द कांग्रेस लीडर्स वर बिहाइंड इट, दे जस्टिफाइड एवरी वर्ड। लिसन टू व्हाट वाज चांटेड एट एन एयरपोर्ट। ये कौन सा यूनिवर्सिटी है? अगर है भी तो दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ हेट एंड बिगेटरी। और इसके वाइस चांसलर कौन है? कांग्रेस के नेता। सुन लीजिए, कभी कोई भी पार्टी किसी भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री के बारे में किसी नेता या किसी कार्यकर्ता को ये नहीं कहती है कि अभद्र भाषा का प्रयोग करिए।
कोई पार्टी नहीं कर सकती। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। ये क्या बात कर रहे हैं सर? आपके पार्टी के जो अध्यक्ष है वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उन्होंने माफिया कह दिया था। अखिलेश जी ने क्या कहा था योगी आदित्यनाथ के बारे में? महंत माफिया है। उसके बाद कुंभ में भी क्या क्या बोला गया। राहुल गांधी भी अपने पार्टी के बड़े नेता हैं, वही कह रहे हैं गद्दार। तो जो कार्यकर्ता है वो क्या सीखेंगे? प्रोफेसर मंडल, the prime minister had a few things to say about the TMC also. The prime minister, I think, is a master of making a victim out of himself. And we have seen this for the last 10 years. And that master is winning him elections also. Good luck to his rhetoric. Good luck to his way of mastering the art of deceiving people. But we are very sure the Prime Minister is going to live longer. Our good wishes with him. We have got nothing to do with the person that Mr. Narendra Modi. In fact, we all appreciate the rise that he had. The meteoric rise. He was fanning Mr. Advani sitting on his legs during 1992. And you can still see the picture from the legs of Advani to become the head of the state in this country. It is a remarkable rise, and we appreciate that. But we will criticize his policies. We will criticize the country, the way the country is going down. Look, 4 days back, Trump was an anti-national for you. Just 4 days back, the Trump was an idiot. Trump was a joker. I had shows on your time also. You had called him all kinds of names. No, Mr. sir, Trump. I have not called anyone any names. Trump has become Professor a friend Mondal, of please India. don't blame the anchor, please. Call out people who called him names. 1 minute, Professor Mondal. Now, don't use Trump don't use Trump because you don't have 1 minute, sir. You're talking about 1 minute. You are saying, Prime Minister Modi, when he was an ordinary karyakarta, would sit, at Advani's legs. That is discipline, sir. You know what Congress leaders have said about the discipline in RSS? Digvijay Singh has said it. Now you can continue to mock the discipline and then blame vote chori. Shazia, you've heard the opposition. They are saying Prime Minister Modi is playing the victim card. Good evening, Pranesh, to you, to all the panelists and all your viewers. I'm personally extremely, disgusted with what I've heard today. And I'm sure a lot of people feel that way. And it's not because I represent a party, but the kind of language used by Rahul Gandhi, by his and the behavior. अभ्रत जबान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनका बिहेवियर था और जिस तरह से वो पेश आए हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता. I agree with Harshvardhan ji. It's difficult to live this down for Rahul Gandhi, and he's gone down a very slippery path. I don't think he can really recover from this. As for the Prime Minister is concerned, yes, I don't think he made himself into a victim at all. He said, the more you abuse me, the more you should know that I'm blessed by the entire country. And I have all the blessings, and which makes me very, very powerful and well. And he also said, and I've just heard from Kamru Zama that he indeed is a traitor about Bittuji. What would they call Sharad Pawar, who was the first man who questioned Sonia Gandhi's foreign origin and made his own party, NCP, along with Tariq Anwar and P.A. Sangma? What would he call Mamata Banerjee? Are they all traitors? They should say that. Why are they in the Gathbandhan together? Does the party allow them to be in a coalition with traitors? So I think it was really. No, there are other examples also. Let's ask Mr. Kamru Zaman about the Telangana Chief Minister. You are right about Sharad Pawar and the others. Is Telangana Chief Minister a traitor? Has he betrayed the BJP, joined the Congress, become Chief Minister? Kamru Zaman ji, jaldi se iska jawab de dijiye. देखिए, सबसे पहला चीज है, देश दो आइडियोलॉजी में बटा हुआ है. एक है सेकुलर आइडियोलॉजी, जो 140 करोड़ जनता को लेकर चलने वाली आइडियोलॉजी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास सबको लेकर चलती है. और एक है बीजेपी की आइडियोलॉजी, जो सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य से चलती है. और हमारे लिए जो हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य में चलती है
और जो इस देश के गरीब नौजवानों के खिलाफ काम करती है, No, so you are okay. So you believe Congress represents the secular ideology? Well, Karan Verma will tell you about that. But Shazia, make your point. No. Let me finish saying what I was saying. Yes, Kamru Zama has no answer, so he's changed the topic. And just now, Kamru Zama also mentioned that there was nothing positive about what the Prime Minister said. Prime Minister did mention Jan Dhan Yojana and 57 crore bank accounts opened. Total deposit about 2.74 lakh crores are there in the Jan Dhan accounts. 56 accounts are held by women. This is the biggest financial inclusion. This is what governance is. This is why Prime Minister Modi... No, you are mistaken. You are gravely mistaken. No puns intended here. Gravely mistaken. Because unless you praise the Gandhi family, the Congress will not see anything positive. That the Prime Minister utterly failed to do. Karan Verma. No, Pranesh, Kamru Zaman has, come up with this definition of a traitor, and it's come from Rahul Gandhi, that anyone who leaves the Congress is a traitor. Supposing we take this on face value, and we should not go farther from the family. So, Pranesh, Motilal Nehru, the great patriarch, he left the Congress party in 1922 after the Chauri Chaura incident and formed the Swaraj party. So, does that mean, Kamru Zaman, that Motilal Nehru, Rahul Gandhi's great-grandfather, to begin with, was a traitor? Kaisi baat kar rahe ho aap? I mean, this is so ridiculous. This entire family, they end up tying themselves in knots. Such is their illustrious history, Pranesh. And Pranesh, please fix the echo. Secondly, Pranesh, if I come to the moot issue here, he said the Prime Minister hasn't made positive points. He's talked about the Indo-US trade deal. Isn't that positive? He talked about the startup ecosystem. I mean, what else is positive for them? Every single session, Pranesh, they try to derail the issue. Sometimes it's Pegasus, sometimes it's the Hindenburg report, sometimes it's an unpublished book. So it is the intention of the Congress party to become this hoodlum and then cry horse. And IP Singh साहब, लीडर्स ऐसे नहीं कहते. इनके लीडर हैं जो कह रहे हैं हम डंडा मार, मोदी घर से नहीं निकल पाएगा, उसे डंडा पड़ जाएगा. This is Rahul Gandhi saying this. If Mr. Modi's security is in danger, it's because of these uncouth elements who make these statements. Modi को मैं मार भी सकता हूं. Nana Patole, at that time the Maharashtra Congress chief, not some ordinary कार्यकर्ता, someone in a leadership position has said this. Imran Masood, I think he was in Samajwadi Party, IP Singh Saab's party, maybe IP Singh Saab wasn't there at that time, when he said Modi की बोटी कर सकता हूं. This is the kind of language, this is the kind of vitriol, hatred that we've had. And Monojit Mandal, he said the rise of Modi ji. I'll tell you the fall of a person, Pranesh. On 4th August 2005, a lady threw the papers at the speaker and said that illegal should not be allowed in my country. The same lady on September 19, 2017 sat on a dharna and said these 40,000 illegal Rohingyas should not be deported. They are common people, treat them normally. That lady happens to be Mamata Banerjee. So yes, we have a story of a rise. We also have a story of a fall in terms of morality. हर्षवर्धन जी, I'll come to you. Professor Mondal, I'll come to you. हर्षवर्धन जी, आपने शुरुआत की, आपने कहा राहुल गांधी जहां चले गए हैं, कहां चले गए हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी कहां चले गए हैं उसका एक अनुमान इस बात से लगाना चाहिए कि जब देश किसी भी मुश्किल स्थिति में होगा तो राहुल गांधी देश को और मुश्किल स्थिति में डालने की कोशिश करेंगे. डोकलाम के वक्त उन्होंने क्या किया सबको ध्यान में है. गलवान के वक्त उन्होंने क्या किया सबको ध्यान में है. ऑपरेशन सिंदूर के वक्त वो कौन से सवाल पूछ रहे थे, ऐसा तो शायद पाकिस्तानी भी पूछने में थोड़ा शर्माएगा, वो सबको ध्यान में है. जब ट्रंप भारत के साथ निगोशिएशन में थे और भारत की अर्थव्यवस्था को डेट इकोनॉमी बता रहे थे, तो राहुल गांधी भी मुस्कुराते हुए डेट इकोनॉमी बता रहे थे. अब तो उसी ट्रंप ने डेट इकोनॉमी के साथ ट्रेड डील कर ली, तो राहुल गांधी क्या करेंगे? और राहुल गांधी अभी जो इस सत्र में भी जो उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बोला है, अगर उसको आप ध्यान से देखें, वैसे मैं तो निजी तौर पर मानता हूं कि बिल्कुल बोलने देना चाहिए था. एक पैराग्राफ से ज्यादा राहुल गांधी ढंग से बात कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी नहीं बोलने दिया, चेयर ने नहीं बोलने दिया. मेरा मानना बोलने देना चाहिए था, क्योंकि नरवाने साहब तो खुद ही बोल चुके हैं 1 इंच जमीन नहीं गई. नरवाने साहब बता चुके हैं कि हमने क्या स्ट्रेटजी अपनाई. वाईके जोशी बता चुके हैं दिल्ली से ऑर्डर नहीं आता है, हमें पहले से एक कमांड है. खुद नरवणे जी कह गए हैं कि 2014 के बाद अब ये ऑर्डर दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम गोली चलाएं या ना चलाएं. मुझे लगता है कि राहुल गांधी को बोलने देना चाहिए था, लेकिन
जरा सोचिए कि नेता विपक्ष पहले दिन 40-45 मिनट स्पीकर से एक नोकझोंक करते रहते हैं, अगले दिन फिर वो आते हैं वही करते हैं, और उनका अंदाज सोचिए अलग अलग तरीके से रिफ्रेज करके, और वो वही बात कर रहे होते हैं। इससे आप समझिए वो कितने सीरियस है। और अभी मैं सुन रहा था कि पॉजिटिव बात, पता नहीं क्यों नहीं सुनते हैं ढंग से, शायद वही वाली बात सुनाई देती है कि सरनेम चुरा लिया या ये सब इस तरह की बातें सुनाई देती हैं। इस देश में अनमैन्ड क्रॉसिंग को खत्म करने का काम मिशन मोड में मोदी सरकार ने किया है। स्कूली बच्चे, उनकी बस टकरा जाती थी, किसान ट्रैक्टर ट्रॉली सहित टकरा जाता था, यात्रियों की बस टकरा जाती, कहीं बाजार में लोग कट जाते थे। खत्म हो गई वो खबरें। ये पॉजिटिव न्यूज नहीं है। देश के हर गांव में बिजली पहुंचना पॉजिटिव न्यूज नहीं है। देखिए, आपने बोला तीन चार उधर जवाब रेडी हो गया। कमरू जमान जी आप बोलिए। आईपी सिंह जी मैं आ रहा हूं आपके पास राइट आफ्टर हिम। देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जो उचित समझे वो कर रहे, वो बोल रहे, लेकिन सवाल यहां पे क्या आ रहा है कि अगर मोदी जी अगर अपना विफलता को छुपाने के लिए डिबेट को घुमाकर अर्लियर गवर्नमेंट्स के ऊपर में वो ब्लेम देना चाहते हैं तो वो उनका मर्जी है। लेकिन ये एक समझ लीजिए प्रणेश जी, दैट द करंट इकोनॉमिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स दैट वी आर प्राउड ऑफ नाउ आर बिल्ट पार्टली ऑन फाउंडेशंस लेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, like the liberalization of 1991, the IT sector growth, the welfare programs, all were laid by the Congress party, UPA, even the NDA governments of 1998. Now you come into power. Add to it that the Congress. No, 1 minute. Add to it, Kamru Zaman ji, you missed out the most important part. Just add to it the fact that India got independence because of efforts of the Congress party. ये भी बोल दीजिए। नहीं, Pranesh, at least minus the RSS. Everybody else fought for independence. Yeah. That's a fact. So let's not go into that line. हाँ, गोडसेवादी जो आज देश चला रहे वही जो है नफरत कर रहे थे वहां पे कांग्रेस को। Okay. Now, Kamru Zaman ji, you said why does the Prime Minister keep going back to earlier comments? First of all, what is this earlier comment, sir? You know, by that logic, you should not be talking about the legacy of the dynasty. वो तो earlier था, pre-earlier. Let's not go there. And this book that Rahul Gandhi has been wanting to talk about, even that is earlier, sir. It hasn't happened now. So that is no defense. 1 minute. You said minus Congress, minus RSS got us a freedom. Karan will respond to that. But IP Singh wanted to counter Harshvardhan ji. Boliye sir, please. देखिए, हर्षवर्धन जी आज बड़े तगड़े भाजपाई हो गए हैं और प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में बैठ के झूठ बोलते हैं। अरे भाई, मैं अभी बलरामपुर गया था, 4 रेलवे क्रॉसिंग गोंडा शहर में 110 किलोमीटर दूरी, फिर मैं गोंडा से आगे बढ़ा बलरामपुर 60 किलोमीटर, 3 रेलवे क्रॉसिंग बलरामपुर तक, और आप बैठ रहे हैं कि आरओबी बनवा दिया, पूरे देश में रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिजेज बन गए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को खतरा है, दिल्ली पुलिस संज्ञान ले और एफआईआर दर्ज करे, कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों को सर जाना चाहिए, आप लोगों को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। आप जाइएगा, आईपी सिंह जी डेलीगेशन लेके पहुंचिए आप, और ये जो आप कह रहे हैं ना उसका एप्लीकेशन दे दीजिएगा और बता दीजिएगा किससे खतरा है, और मोदी तेरी खबर खुदेगी कौन चिल्लाता है, ये सब भी सब बता दीजिएगा। करण नहीं, एफआईआर सबसे पहले जब प्रदेश होती है तो देखा जाता है किस किसने थ्रेट दिए, तो इन सब के ऊपर होगा। ये इमरान मसूद, राहुल गांधी, ये सब आ जाएंगे शक के दायरे में। आईपी सिंह साहब राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए, हमें पता है। यहां पे भी वो हल्के हल्के उनको फंसा दे रहे हैं कि भाई राहुल गांधी का सबसे पहले नाम आएगा, डंडा मारने की बात उन्होंने करी है। तो आईपी सिंह साहब जैसे अगर एलाइज हो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है कांग्रेस पार्टी को, मेरा ये मानना है। ऑन अ लाइटर नोट, having said that, you know, Kamru Zaman just made a point that it's only the Congress and not the RSS. Please fix the echo. It's only the Congress that has worked towards the independence. Who was Dada Nayak? Kamru Zaman, who was Dada Nayak? Who laid down his life 1942 in Chimor? He was from RSS. Aruna Asif Ali. I'm sure Aruna Asif Ali knows much more about you. A senior person of the Congress party. She said, my struggle would not have succeeded if not for Lala Hansraj, who was the head of RSS in Delhi. He gave me shelter, which is why we could carry out the movement.
Hemu Kalani, so many names who laid down their lives and you disrespect them day in, day out on national television. Look what Sardar Patel has said about the sacrifice of RSS. Look what he said when the ban was removed. He said, I know you are patriotic. Look at the letters that were sent at that time by Gandhi ji, by even Ambedkar ji, that they are a disciplined lot dedicated to the cause of nation. So, you don't know more than Gandhi ji, Ambedkar and all these people combined. Stop undermining the sacrifice of those who made this nation possible. And when you talk of our illustrious history, talk about 1962 China War. You said now that Nehru has given these institutions to this country. He's also given us 1962 China War. Indira Gandhi has given us 1975 emergency. When it does not suit the narrative of the Congress, then they will make this request that, let's talk about present day India. Let's not go back in time. When it suits them, they will start from, India's first unelected Prime Minister, Jawaharlal Nehru. Right, Kamru Zaman ji? Absolutely wrong. When the book of General Narvekar was unpublished, it was censored by the Narvekar nahi hai, sir, wo General Naravne hai. Naravne, sorry. The point is that when Rahul Gandhi wanted to bring out this point on national security, why did the government chicken out? Why was Narendra Modi so afraid and hiding behind the accusation? Shazia Ilmi just told you, Karan Verma also said, have you not heard what General Naravne had said about a free hand that he enjoyed? Even in his book he says that within 2 hours I got an instruction from the Raksha Mantri. वो free hand है. शाजिया इल्मी, यस, जो उचित है वो करो और उसके रिकॉर्ड्स हैं. तो आप चेरी पिक कर रहे हैं और आप ना आगे का पढ़ना चाह रहे हैं ना बात का, और आपको बहुत घबराहट है, लेकिन आप उसे चुनेंगे क्यों? इस लाइन को आप क्यों चुनेंगे? बताइए आपके दिल में क्या था? ये एक दुर्भावना है. The intention behind bringing up this excerpt from a magazine of an unpublished memoir just shows the complete intellectual depravity of Rahul Gandhi and how he's working at creating some kind of a rift between the army and the executive. And I think it's a terrible, terrible way to go. And it says a lot about him. It doesn't behove LOP. After all, he's from my country. And to work against your country, your nation, against institutions. Vandana Sinha ji, at least, on principle, would you condemn the Modi Teri Kabr Hai, Kabr Khudegi slogan? Pranesh, ऐसा लग रहा है कि none of the parties, neither Rahul Gandhi nor Modi, none of them are serious about the country. दोनों के दोनों यहाँ नफरत की दुकानें चला रहे हैं और कोई भी सीरियस no serious issue has been taken up. आज आप मोदी जी की चाहे आप 130 मिनट की आप भाषण सुन लीजिए. ठीक है. He successfully saved himself from. वंदना जी, can I ask you a question with your permission? आप बताइए, एक छोटा सा सवाल है. बोलिए मैम. जी बताइए. आप कह रहे हैं राहुल गांधी and नरेंद्र मोदी, they are both not serious about the country. Not right? at all. When, wait a minute, ma'am. Here's the question. When did the Aam Aadmi Party realize this about Congress and Rahul Gandhi? कब आपको लगा कि राहुल गांधी सीरियस नहीं है? देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं, आपको भी पता, और आज भी इसी चीज पे मुद्दा है. ठीक है, राहुल गांधी. नहीं तो ये आपको पता कब चला कि ये स्टेटमेंट्स देते हैं ऐसे? कितने दिन पहले पता चला? मैं वो जानना चाहता हूं. नहीं, आम आदमी पार्टी उसका हमेशा साथ दिया जिसने काम के लिए काम किया है, देश के लिए, राज्य के लिए. स्टेज पे अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी इंडिया अलायंस के मेंबर्स थे अभी रिसेंटली. तब तक आपको समझ में नहीं आया था राहुल गांधी इज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. When Rahul Gandhi called Mr. Kejriwal corrupt, then you thought Rahul Gandhi is speaking against, is not working for the benefit of the country. So all of you must introspect, and I just want to underline one thing. You can have political differences, but this kind of narrative or rhetoric, Modi teri kabr khudegi, or Rahul teri kabr khudegi for that matter, is not right. Let's rise above it. But there's another story that has been buried by the ecosystem. I thank some of you for joining us. IP Singh ji, I request you, दूसरे debate में भी आप रुकिए. Professor Mondal, if you can also. Let's shift our attention, viewers.